Hare Krishna, good morning and welcome all of you for our Sunday morning class. Bhagavad Gita 5.14, chapter number 5, verse number 14. Yeah, who can read the verse please? The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. So, how do we understand? So much of noise. So what do we understand from this? The first verse, earlier verse in 5.13, Lord is saying that this soul is housed in a city of 9 gates. What are the 9 gates? 2 eyes, nose, ears, all the genitals, our anus, everything. All this together forms the 9 gates. So this soul is housed inside a city or in a body. So we are separate, body is separate. So body के अंदर हम लोग को एक जगह मिला है. We are running. It's like a SIM card is separate from the mobile. A mobile is useless without SIM card. But vice versa, just with a SIM card you can't make a call. You need a mobile. So both are complementary to each other. But the main source of energy is from the SIM card. Regarding the the mobile, that is anyhow you are charging with the energy and the battery gives the power. And in case of our human body, we are eating food, we are nourishing ourselves with various eating things. So this soul, once it is this embodied spirit or soul, what we call it, is once is established, masters the city of this body, does not create any activities. ये कोई कार्य करता नहीं. That is Mataji. Does not do any activity, but he is induced. He induces people to act, nor does he creates the fruits of action. ना वो कार्य करता है, ना दूसरों को कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, ना ही उसका फल लेता है. Please understand, this verse and the next verse are both interlinked very strongly and has got a lot of messages to understand. And all this is enacted by the modes of material nature. क्या समझ में आया? Fine, let this the seniors can say. Prabhuji, then the soul has to still bear the actions. That's okay. What did you understand till now? We are not talking of the Krishna. Soul is not responsible for. Soul is not responsible. Very good. Or else, what else? Come on. See, here the line states is all that is enacted by the modes of material nature. So, क्या समझ में आता है? और what is the mode of nature? कितने लोगों को mode of nature मालूम है? Who are new to this topic? Mode of nature जिसको पता नहीं. Anybody who is new to the word mode of natures? You are new. There is something called Prakriti. Prakriti means generally we understand as nature, but that's not here what we are referring to. We are referring to is the 3 modes of nature or 3 types of moods people have. They are basically सत्वगुण, रजोगुण and तमोगुण. और इन गुणों से ही व्यक्ति सब कार्य करता है. And ये गुण अगर नहीं होने, if these 3 modes are not there, then a person, human being cannot survive. He cannot do any activity. For every activity, you have to undertake the shelter of a mode. Mr. Gandhi, how do you understand this? Can you explain? Do you understand this? What I said? I mean, this is a characteristic which drives us to take a certain action. Yes, very good. They are characteristic features, they are the impetus to give us the dual action. They give us the impetus. जब तक आप सत्वगुण में नहीं रहेंगे, आप ये क्लास में नहीं आ सकते. जब तक आपके अंदर रजोगुण नहीं होगा ना,
तब तक आप सुबह उठ के पैसा के लिए पीछे नहीं भागोगे. You will not run for money. A सतोगुणी व्यक्ति is satisfied. I am happy, I am satisfied. Whatever I am earning, whatever I am getting, I am happy. Whereas the Rajoguni व्यक्ति, he has got Trishna. Trishna means he wants more. More money, more name, more fame, no more recognition, everything. And a Tamoguni Vyakti ka definition as per the Bhagavad Gita, what is it, Mataji? What do you understand as that? Yes, Chandrakant Prabhu will explain. Very nice. He's lazy. He's lazy. Okay. And he doesn't have any, like, he just wants to loiter around. Like, That's not the complete understanding of Tamoguna. He also always stay in ignorance. Stay in ignorance. Okay, fine. Something more? See, unless until you don't understand the three modes of nature, you can never understand a human being's way of behavior or his thought process. Yes, Dr. Sir, what do you feel? What is Tamoguna? It's always for self-satisfaction. Tamoguna is not for self-satisfaction. Rajoguna is for self-satisfaction. Yes, Madhuri. मदिरा जुआ खेलना हाँ, तो जो जितनी भी व्यसन है उनके गुलाम बन के जीना. उनके गुलाम बन के जीना. ठीक है, गुड. और Looking on forever principles, being in ignorance, but what is that? What is the basically what is the quality? doing all bad activities. See, mind is, I think they are not doing as per the mind. Mind is dominating them to do all these kind of. In all three cases, the gunas only dominate. The mind never dominates. The mind has to take the shelter of the gunas to do the activity. Please understand, बहुत जरूरी चीज है. थोड़ा भारी आज का क्लास थोड़ा भारी है, but you will have to आज जरा आवाज सब आएगा सिर में से. The gears are moving after a long time. But please understand that unless and until one doesn't take the shelter of these modes, one cannot act. For example, as I told you, Tamogun is an activity which is done by a person which is unproductive, which is destructive. For example, we take a terrorist. He uses intelligence. Mind you, to do a terrorist activity, you have to use intelligence. Too much ignorance. हाँ, इनफैक्ट ओवर इंटेलिजेंस. इसके लिए वो डायलॉग है ना, 11 मुल्कों की पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती है डॉन को. तो to become a don, you need to be very smart, smarter than the police. Second, you are hyperactive. You may get up at 6 o'clock, but a terrorist will get up at 4 o'clock. So he needs to be hyperactive. But what is the use when the entire activity is used for destruction, which is of no use? So please understand, Tamoguna doesn't only refer to a person who is involved in these type of activities like meat eating, intoxication, illicit sex and gambling. This is by default hai. I am not denying. But over and above, a Tamoguni person is one who is involved in unproductive or not, which are good for the people, which are harmful for the others. Such type of activities he will be in. So, always remember, for example, if one has to involve into sexual indulgence, even for sexual indulgence, one has to take the shelter of Tamoguna. In Satoguna, he cannot indulge in sexual activities even with his wife. That is how Tamoguna is. It's a very important guna, but it is not productive. So, body कोई activity करती नहीं. मनुष्य का प्रवृत्ति होता है ना, you got a natural inclination. No, how many of you have heard the word kleptomania? What is that? चोरी करना. And you won't believe it or not, Shami Kapoor had this problem. Shami Kapoor, he once stole away a doctor's stethoscope. That's a thing, kleptomania.
That's a word, scientific word given to that. But what does that actually mean? Earlier births, Samskaras. that samskaras have its effect. One may have drinking problem, lot of drinking problem. But why is that person having drinking problem? Why is that guna? Because in earlier life also he has been doing the same activities. And that is why आचार्य से आप भी कई बार बाबा जी को लेकर देखोगे, कभी धतूरा लेंगे, कभी चिलम लेंगे एंड ऑल दैट. दिन भर तो भगवा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं. दे आर वेयरिंग सैफरन क्लॉथ एंड दे आर डूइंग भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं. बट इन द एंड ऑफ द डे दे नीड अ चिलम और drugs or whatever you call it. So why is that? This is their पूर्व संस्कार. सुधरे हैं मगर अभी तक पुरानी आदतें, अभी तक वो आदतें हैं. That is why please remember, you will have to transcend the three modes. कम से कम सतोगुण को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा so that you can control your rajo and tamo. Rajo and tamo, you cannot eliminate zero. If you don't have tamoguna into 1% also, you cannot sleep. Only in tamoguna a person can sleep. So you need three. It's like, body requires proteins and carbohydrates, vitamins, vitamin D3, iron. आजकल तो trending है ना ये सब disease. So all these gunas play a very pivotal role. अगर रजोगुण नहीं होगा ना, कोई माता जी खाना नहीं बना सकती. सतोगुण में प्रभु जी कीर्तन करती हूँ, सतोगुण में कीर्तन करती हूँ, आज भगवान को भोग भी कौन उठेगा. यू नीड एन इम्पेटस टू गेट अप. कोई गर्मी में किचन जाओ, सब्जी काटो, धो, काटो, बनाओ, जो भी हो, they need an impetus. You go to office, go to run to business, everywhere you need an impetus. That comes from Rajogun. But that Rajogun also should be controlled by. If that is where it triggers. When as long as your Satogun is controlling your Rajo and Tamo, it's fine. But the minute Satogun loses its control over your Rajo and Tamo, Rajoguna and Tamoguna, then don't think जो शराबी बैठा है बियर बार में, वो भी सतोगुण वाला एक्टिविटी दिखाता है. क्या करता है? पहला खोलेगा शराब का, दो बूंद नीचे डालेगा, as if he's doing some big ritual. Fool, he's a big fool. But क्या करे, बेचारे के अंदर वो सतोगुण भी है ना थोड़ा. That is why he's doing it. वो शराब का बूंद खोलेगा, नीचे डालेगा and all that nonsense. What are we into? Why he does? Because that Satoguna is there. It's not that he's 100% Tamoguna. Everyone is a mixture of three gunas. One with higher Satoguna is intelligent. But you cannot say ये व्यक्ति के अंदर तमोगुण या रजोगुण नहीं है. हो ही नहीं सकता. It has to be a combination. Like your vitamins, your iron, D3, everything. Excess of iron, excess of protein can destroy your kidney. Excess of protein can destroy your kidney. Vice versa, less of protein can also be injurious. So one needs to have a balance. And in spiritual life, Satogun should be on a higher platform. Then it will control your Rajo and Tamo. Rajo mein you will get hankering. Even for name, fame, power also you will get hankering. Chalo, mera bhi naam ban jaye kuch. It's not necessarily money. It can be name, fame also. One can be hankering for that. But even if you are hankering for name, fame, not a problem. But as long as you are controlled by, it's not that a person who is in a spiritual life doesn't produce children. He also indulges in sexual life and produces children. But then that is under a framework. Today's date, children are born on over a glass of wine. There also children are born. Here also children are born. But there is a difference. वहां पे शराब पी के कोई बच्चा पैदा करेगा तो घर में प्रहलाद नहीं आने वाला. Please don't be under the impression घर पे कोई प्रहलाद आने वाला है या ध्रुव महाराज आने वाला है. You will get someone बहुत जल्द वो आपको बुढ़ापे में उठा के आपको
रास्ते में डालेगा या बहुत अच्छा रहेगा तो वृद्धाश्रम में डालेगा. दैट्स अ हायर क्वालिटी ऑफ इट. इससे ज्यादा डोंट एक्सपेक्ट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, 3 modes of nature makes an person act, but read 5.15, then you will understand the correlation. Nor does the Supreme Lord assume anyone sinful of pious activities, and poetic beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. This shloka is very very important. यार इसको कंठस्थ करके रखने ना. न हरते कश्चित् पापम न च सुकृतिं विभुम् अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः. Very very powerful and very very meaningful shloka. It says न हरते कश्चित् पापम. कई लोग सोचते हैं ना, मैंने पाप कर लिया है, ठीक है, उसका पश्चाताप क्या करना है? मंदिर में 1 करोड़ रुपया दान दे दूंगा तो मेरा पाप चला जाएगा. If I go and pay 1 lakh rupees or 1 crore rupees, और I feed अनाथ आश्रम में, मैं पूरा अनाथ आश्रम चलाता हूँ, सबको खाना खिला रहा हूँ, सबको ये कर रहा हूँ, so is it okay? How many people think their bad activities can be cut by good activities? Yes, do you think your good activities can cut by bad activities? No. Why? It's not a balance. Like ऐसा नहीं कि मैं like it's not a fair world also. ऐसा नहीं कि मैं कुछ अच्छा काम करके पूरे कर्म मेरे भूल जाएंगे लोग. है लोग भूल जाने छोड़ो. मैं भी नहीं भूल सकता. मेरे को भी कभी भी आता है. That is the consciousness it brings you. What do you think? आपको क्या लगता है? Whatever the bad activities you are doing, you have to get those, by the good activities you cannot, but मतलब फल आपको भुगतना पड़ेगा. फल भुगतना पड़ेगा. But generally people have got this attitude, thinking that मैंने कुछ गलत कार्य किया है तो थोड़ा कुछ अच्छा कर लूंगा तो मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे. But this is the biggest blunder. This is what is confirmed in the Bhagavad Gita. न अदते कश्चित् पापम, ना मैं किसी का पाप लूंगा. न च सुकृतिम विभुम, ना कभी मैं किसी का सुकृति मतलब पुण्य लूंगा. तो मैं भगवान क्या बोलते हैं? पाप भी तेरा, पुण्य भी तेरा. You enjoy your sin, you enjoy your punyas also. For the sins, you have to go to hell, suffer. As much of sins you have done, you are going to suffer, and you are going to come down to this material world back. इसके लिए स्वर्ग जाने के लिए अगर कोई अभिलाषा कर रहा है, वो सबसे बड़ा गधा है, बेवकूफ. क्यों? स्वर्ग में जाके क्या करोगे? थोड़ा दिन एंजॉय विद अप्सरास, डांस विद अप्सरास, देन कम बैक अगेन टू दिस, और यहीं पे आके वापस A for apple, B for ball से पढ़ाई चालू कर, है ना? What else? तो Lord elsewhere, Lord says, न हरते कश्चित् पापम न च सुकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम. अज्ञान से, इग्नोरेंस या ज्ञान की कमी की वजह से, अज्ञानेन आवृतम, आवृतम मीन्स कवर्ड, ढक गया है, अपना असली ज्ञान ढक गया है, जिसकी वजह से अज्ञानेन आवृतं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. इसके लिए पीपल आर कंफ्यूज्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्म. कई बार हम बोलते हैं कि माता जी तो बहुत झगड़ा करती है, ये प्रभु जी तो बहुत सबको सताते हैं. We may say, generally we have got the propensity to say like that, but what? That is that mode of nature under which those people are. जो व्यक्ति जिस गुणों के अंदर है, कोई लोग हैं एकदम शांत रहते हैं, लाइक उनको कुछ आप बोल के भी जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो आर दे आर पीपल मोर इन द सत्वगुण. कोई रजगुण है जिनको आप, प्रभु जी आप ग्रेट हो, माता जी आप महान हो, मैं ही महान हूं, चढ़ जाएंगे, है ना? कोई बताए प्रभु जी बोले, प्रभु जी आपके बगैर तो ये संस्थान चल ही नहीं सकता है. हाँ, मैं ही चला. तो दैट इज रजगुणा, वो भी होता है. सो दैट इज व्हाई दीज टू वर्सेस आर वेरी इंटरलिंक्ड. प्लीज अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज लॉर्ड सेइंग इज a person generally doesn't do any activity. What makes him, what impetus is given to him is by the 3 modes of
material nature. And secondly, Lord is saying is, भाई जो भी तूने कार्य किया है इसके वजह से ये क्यों कह रहे हैं भगवान? Why is Lord saying this verse after saying that? कि भैया वो नहीं कर रहा है. 3 modes are making him good, right? This is the first verse. Then second verse में क्या बोल रहा है? ना मैं किसी का पाप लेता हूँ ना मैं किसी का पुण्य लेता हूँ. So what is it? The three-moder nature से जो तुमने कार्य किया उससे जो तुमने पाप और तो पुण्य what is the reason? Why is Lord saying that? आदमी बोल सकते हैं ना, तो मैं क्या करूं? मेरे तमोगुण की वजह से मैंने दारू पिया. मैं नहीं पीना चाहता था. It was my tamoguna. So you blame it on tamoguna, not me. हाँ? मेरे रजगुण की वजह से मैं I did मतलब 2-4 खून करके मैं पावरफुल बनाया, पैसा बनाया, जो भी किया मैंने, तो blame it on the guna ना. Why you are blaming me? मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना. And no doubt, Shastra says the soul is always very pure. Then what is the problem? क्यों भगवान ऐसे कह रहे हैं? Is it not a logical question? Please, I have again and again told you all, whoever is interested in reading the Bhagavad Gita, please read the Bhagavad Gita with an understanding to the earlier verse. Okay, I'll ask you a simple question. Suppose, Mr. Gandhi, I shoot you. Huh? You die or don't die, it's a different matter. But I shoot you. And once I shoot, I do this crime. Who will be put to the gallows? Me or my gun? अरे मैंने तो नहीं शूट. गोली कहां से निकला? मेरे हाथ से निकला? गन से निकला. गोली ने को मारा. बंदूक को फांसी पे चढ़ाओ, मुझे मत चढ़ाओ फांसी. Hang the gun, not me. So what will the law say? The law says the gun did its activity, but you were in control of the gun. You pulled the trigger, so you were in control of the gun. So if you have fired it, you have to pay. That gun's job is anyhow to fire. When anyone pulls the trigger, it fires. So similarly, please understand, Lord is saying here, by virtue of the tamoguna, if you are doing a good activity, then you get sukriti. If you are doing a bad activity, you get papa. So वो पाप भी आपका, वो पुण्य भी आपका. मैं किसी का मैं पाप लूंगा ना पुण्य लूंगा. And generally people know that day I was taking one Zoom class and some माताजी told me, प्रभु जी हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध चेंज हो जाता है. Is that the purpose of taking the holy name of the Lord? हमारा प्रारब्ध, मेरा सिचुएशन अच्छा हो जाए. The problem is from the childhood we have been given an incentive to do devotion. हाँ, अरे बेटा मंदिर जाके जा, एग्जाम में अच्छा जाएगा, अच्छा पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. We have been, brainwashed with, or rather, we have been injected with this notion that अगर हमने वो कार्य किया तो हमारा ये होगा. That is a byproduct. That is not a product. Why I always give this example. अगर कोई बच्चा जब स्कूल में, जब नर्सरी में या प्ले ग्रुप में डालते हैं, खुशी से बैठता नहीं है, रोता है, चिल्ला रहा है, तो उसको बिठाते कैसी माँ? माँ बोलती है बेटा बैठ जा, मैंने तेरे डब्बे में I put some wafers, I put some pastries, I put some cake, I put this that, no whatever you like I put. तो बच्चा हाँ रोता है. फिर वहाँ जैसे उसको लंच ब्रेक मिला नहीं, that lunch break is bigger than the school time. The child eats. I think you must be having a good experience of it. That the child eats, and after 4 days, the child he says, I don't mind sitting for 2 hours or an hour, provided I am getting this good. What I like, वो खाना मिल रहा है मुझे. My wafers, my biscuits, whatever it is, I am getting it. Similarly, इंसान को by default उसका रजो और तमो हाई, तो उसको भक्ति करने का शौक है ही बिल्कुल नहीं. He is not interested in doing any devotion. But when he is given some incentive, हाँ 16 शुक्रवार करो आपको ये मिलेगा, 16 सोमवार करो, तो करते करते जिस तरह वो बच्चा स्कूल जाते जाते भले जाता पहले उस छोटे से डब्बे के लिए, या मम्मी स्कूल छूटते वक्त मम्मी कोई चॉकलेट लेके आ रही है, some incentive, some tidbit the child gets.
So slowly the child starts liking the school, and थोड़े दिनों के बाद child going to 9th standard or 10th standard, mother doesn't have to give him I'll give you one chocolate, please go and study, get 90% marks. Okay, parents do give. अभी बड़े बच्चों को भी आजकल देते हैं, साइकिल लेके देंगे, बाइक लेके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, but that's still a push for someone to do कोई भक्ति करने के लिए, उसके लिए एक what is it in Hindi? Push, प्रोत्साहन, मिसइंटरप्रिटेशन, प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना उससे, ताकि वो भक्ति कर पाए. तो वो तो कर्मकांड में आया. That is all coming. Karmakand is the first step. Karmakand is the first step for devotion. So Karmakand means what? आपको इन सब चीजें, but it is not wrong. It is been devised because a child by default doesn't have a propensity. We humans do not have a propensity to do devotion. और कोई पंडित जी बोल भी दे ना, सुबह उठ के कौन जाएगा? इसीलिए पंडित जी को बोलना पड़ता है, भूखे बैठ जाओ, क्यों 10 बजे उठेगा, तो उसको मालूम है 11 बजे तक भूखा बैठ रहना पड़ेगा. उससे अच्छा मैं 9 बजे उठता हूँ या 8 बजे उठता हूँ, जाता हूँ, कम से कम आऊंगा, जल्दी खाने को मिलेगा. So these are all ways in which you push the child, you mold the child or mold the person towards devotion. That's our entire Vedanta system works on this. Our entire Vedas are working on this. And if these gunas are not there, तो क्या एक सतोगुणी व्यक्ति के अंदर रजो और तमो को कैसे मेंटेन करना पड़ता है? How do you think we will have to maintain rajo and tamo? He needs to earn, so naturally he has to go to work. Yeah, correct. He has to run his bread, butter, jam, cheese. So how will you control your rajo and tamo? Tell me. It's important, right? If you are all calling ourselves in the practice of devotion, I don't say devotees, but it is in the practice of devotion. How will you control? Why your intelligence, Sattva intelligence? Then, You do all the activities by keeping. I'll give a classic example of krodha, anger, which is a classic characteristic quality of rajoguna. Kamesh, Krodesh, Rajoguna Samudbha. 3.13, 3.17 we clearly said, 27, 3.27 is clearly said, Kamesh, Krodesh, Rajoguna Samudbha, Mahashma, Mahapapma, Vidyanam, Yavarinam. So Lord clearly says, Rajogun ka main identification is Krodh. Tamogun, Krodh hai, but see the difference. When Hanuman ji went to Lanka, जब उन्होंने सीता मैया को देखा, उनको क्या आया? क्रोध आया. और क्रोध से उन्होंने क्या किया? पूरा लंका जला दिया एंड पूरा तहस नहस कर दिया. तो कि वो क्रोध सही था या गलत? तो क्रोध आना गलत नहीं है. The intention, the purpose, that क्रोध is controlled by सत्वगुण. सत्वगुण से वो क्रोध controlled है. That is why he did right. So those parties who will be supporting Ravana, they will say, he has done a bad thing, he has done a destructive thing. Sattva-guna is driven by dharma. Dharma means righteousness. Who is doing it righteously? For him, this perfect. So krodh ke aane pe every person has to maintain his anger in control. He should keep. In fact, Hanuman ji, after burning the entire Lanka, he goes to the sea and extinguishes his tail, उनका पूंछ बुझा. तो वहां जाके उनको टेंशन आई, हे भगवान, मैंने क्या गलती किया? मैंने पूरा लंका को आग लगा दिया. सीता मैया भी तो उस लंका में है, वो भी तो जल के मर जाएगी. तो तुरंत जाके कूद के देखते हैं, तो देखते हैं कि सिर्फ अशोक वन जो था, अशोक वाटिका है, वो बच गया और कहीं कुछ हुआ नहीं. पर सीता मैया को कुछ होगा नहीं, वो बात अलग था. बट ही रिपेंट्स एंड ही रियलाइजेस कि क्रोध कभी कभी कंट्रोल में अगर नहीं हुआ तो इट कैन बर्न यू योरसेल्फ और योर बेनिफिट. आपका जो फायदा है, जिसके लिए वो गया था, अगर वही जल जाती तो फिर क्या फायदा उस क्रोध का? सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल विद दिस एंगर. There's one just
I remembered one incident from Eknath Ji that just shared this incident before we go ahead. Once Eknath Ji was giving pravachan. In fact, Eknath has written Sant Eknath has written a book on Ramayana. It's a Bhav Ramayana. Okay, yes, one very nice commentary on it. So he's giving a katha and it was in Hanuman temple. So Hanuman जी पीछे बैठे और वो कथा है और बोल रहे हैं देखो wherever Ram katha is going on, Hanuman ji is going to listen to katha. That is for sure defaulting. तो हनुमान जी सब सुन रहे हैं. तो एकनाथ जी बोल रहे हैं कि देखो अशोक वाटिका में ना सारे पुष्प सफेद रंग के थे और वहां सीता मैया वहां थी. हनुमान जी गदा लेके बैठे. ही इज लिसनिंग. अशोक वाटिका में सफेद सिर्फ लाल रंग के फूल थे. he gets angry. So immediately, makes his eyes big and tells Eknath Ji, गलत बोल रहे हैं, saying wrong. Eknath Ji saw that. अच्छा, मतलब एक्शन में आ रहे हैं. नहीं, बहुत सुंदर वन था. खूब सुंदर पुष्पों से सजाया गया था उस वन को. हनुमान जी, आई एम शोइंग यू साइंस एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग. बार बार दिखा रहा है. एंड आई टेल यू पूरे वन में एक लाल फूल नहीं था, पूरा सफेद. हनुमान जी गॉट टू जिटर्ड, immediately came out. How come you are saying this? You are sitting in the Vyasasana, that's why I am not hitting you. Because Vyasasana में जो बैठा रहता है उस पे is as good as Vyasa, God. So you should not speak. You should not speak bad or you should not use harsh words. So he said, since you are sitting on Vyasasana, I am keeping my mouth shut. Cut down, I'll smash you. How come you are saying this? I have seen or you have seen. I had gone to Lanka or you had gone to Lanka. देखो हमको मारना है. हमारे गुरुजी ने हमको यही सिखाया. जो हमारे गुरुदेव ने सिखाया, बुलाओ तुम्हारे गुरु को. नहीं, आप ऐसा कैसा बोला? आप पहले साबित करो लाल थे. मैं साबित करता हूँ. मेरे गुरु ने बोला व्हाइट है मतलब व्हाइट है. एंड व्यासासन के ऊपर बैठ के मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ. तो इमीडिएटली हनुमान जी से देखो अभी वहां से किसी राक्षस को तो मैं ला नहीं सकता. सबको तो मैंने मार दिया. अब बची कौन? सीता मैया. सीता मैया इज ओनली प्रूफ. तुम्हें उनको लेके हाँ उनको लेके एकनाथ वाज वेरी हैप्पी. संत एकनाथ बिकेम वेरी हैप्पी बिकॉज सीता मैया अकेली तो आएगी नहीं, साथ में रामचंद्र जी भी आएंगे. तो इमीडिएटली हनुमान जी डायरेक्टली गोज टू साकेत लोक. Now what is Saket Lok? Ramchandra Ji's Lok. Now there are 3 lokas you should be familiar with. One is Vaikuntha Loka, where all devotees who are worshipping Vishnu go over there. This is also Vaikuntha Loka means Kuntha means इस धरती में tension, anxiety से. Vaikuntha में no tension, no anxieties, and you never go old also. उम्र का झंझट ही नहीं because you are in the सोल का असली स्वरूप में हो, चतुर्भुज स्वरूप में हो. So in Vaikuntha Loka it is awe and reverence. मतलब भगवान का पूजा करते हो. Just tell me it's 12:20. Otherwise I will. Because today there is no clock also, so just inform me it's 12:20. Second is Goloka Vrindavan, where Krishna is there. Same Vishnu in the form of Krishna is there in his two-handed form, where it's very nice, playful, where you can interact with him in Sakhya Bhav and Madhurya Bhav, in Vatsalya Bhav, you can interact. जो जिस भाव में है उसमें इंटरेक्ट कर सकते. एंड रामचंद्र जी का एक जो लोक है वो है साकेत लोक, where रामचंद्र जी इज ऑलवेज अवेलेबल विद सीता, लक्ष्मण, हनुमान, एवरीवन इज देयर. सब लोग हैं वहां पे, भरत, शत्रुघ्न सब है वहां पे. तो हाँ है वहां पे. हनुमान जी वहां पे भी है, यहाँ पे भी है. बट हनुमान जी यहाँ रुक गए क्योंकि उनको कथा सुनना था. क्योंकि द प्रॉब्लम इन साकेत लोक कोई कथा होता नहीं. हनुमान जी को जब बोला था, जब सरयू नदी में सब जा रहे थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण, राम और भरत, शत्रुघ्न. लक्ष्मण को तो पहले ही भेज दिया था उन्होंने वन में दुर्वासा मुनि की वजह से. यू ऑल नो द स्टोरी ना. तो शेषनाग जब तक रहेंगे भगवान को जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ.
तो पहले शेषनाग को भेजना पड़ेगा, तो पहले लक्ष्मण को भेज दिया, तो दुर्वासा मुनि बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। तो रामचंद्र जी ने तब हनुमान को बोला चलो आप भी चलो ऊपर। बोला मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बोला क्यों नहीं आऊंगा? बोला आपके लोग में कौन सा टाइम पे क्लास होता है? बोला नहीं वहां क्लास तो होता नहीं है, वहां पे मैं होता हूँ। अच्छा नाउ टेल मी वन, अगर आप लोगों के सामने ये पूरी कथा में सुना सच्ची में भगवान आ जाए, कितने लोग मुझे सुनेंगे? कोई सुनेंगे? छोड़ प्रभु जी हटो हटो, डायरेक्ट भगवान मिल गया, अभी आपको क्या सुनना है? व्हाट्स द बिग डील इन लिसनिंग टू यू? बट that's the difference between bhakta, because Lord is there in the actual swarupa, but in the swarupa of his leelas, in his gunas, he is entering your, through your ears, he is entering your heart. That is why katha is most important. तो हनुमान जी पहुंचे वहां पे, सीता मैया बोली बेटा क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो रहा है। वहां पे एक कोई भगत है संत एकनाथ जी, वो बोल रहे हैं कि अशोक वाटिका में सारे पुष्प सफेद थे और मुझे पता है वो सब लाल थे कि मैं था वहां पे, तो आपको आके गवाही देनी पड़ेगी। तो सीता मैया बोले अच्छा मैं आती हूँ, चिंता मत कर मैं आती हूँ। तो वो चल बोले चलो मिस्टर राम जी आई एम गोइंग, माय मिस्टर आई एम गोइंग। तो मिस्टर जी बोले नहीं मैं भी आता हूँ साथ, मेरा भक्त है, मेरा कथा बोल रहा है तो मुझे भी आना पड़ेगा। तो साथ में लक्ष्मण भरत हनुमान शत्रुघ्न पूरा दरबार आ गया, पूरा दरबार देख आहा जय हो एकनाथ जी एकदम भाव विभोर हो गए चरण में। हनुमान जी रुके बीच में, स्टॉप, नो इमोशंस नो, फर्स्ट आई वांट ए सॉल्यूशन। तो तुम्हारा इमोशन मेरे को नहीं चाहिए अभी, वो सब बाद में करें, पहला फूल सफेद था कि लाल, पहले इसमें डिस्प्यूट है, हमको वो क्लियर चाहिए। ठीक है। तो एकनाथ जी बोले देखो मेरे गुरुजी ने बोला था फूल सफेद थे, इसके लिए मैंने कथा में फूल बोला। अभी हनुमान जी बोले मैया आपको तो पता है मैं स्वयं आया था वहां पे, फूल सब लाल थे और इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनको समझा रहा हूं, बट ये समझ ले रहे कि बार बार लाल। वापस पूरा मैटर खुला। तो सीता मैया ने देख के बोला बेटा हनुमान फूल तो वहां सफेद ही थे। क्या बोले? फूल तो वहां सफेद ही थे। गॉड ए शॉक लुक्स लाइक क्या मैं आप पार्टी बदल रहे हो? अभी तो मैं बोला कि लाल थे, आपने भी देखा लाल थे। नहीं बेटा फूल तो सफेद, मगर जिस क्रोध भरी आंखों से तुमने देखा, the eyes which were boiling, which were red hot, because you were angry that I was kidnapped and Rama was and his Rakshasas were torturing me. So because you saw that, your eyes became red, and with those red eyes you saw all the flowers also red. So what is this? Rajoguna in Satoguna. So please understand, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो सतोगुणी व्यक्ति ये नहीं बोलना चाहिए सब प्रभु की लीला है। One should not be spineless. Many people think soft is good. One doesn't have to be aggressive. But if something wrong is happening with you or with someone, one does not say that he should be spineless. In fact, the entire Bhagavad Gita starts with Arjuna saying, why should I kill so many people? Why should I be so aggressive and killing so many people? So many ladies will become motherless, husbandless, children will become fatherless. Why should I do that? And I will incur sin. That time the entire Bhagavad Gita is spoken by Krishna to Arjuna. But for the sake of dharma, you get up, lift your weapon and fight. So, please have this demarcation very clearly. Okay? Don't let any activity or your mode take control or take charge of you. The day Rajogun takes over control over you or Tamogun takes over you, आपका सतोगुण वाला जो कार्य है
भगवान का नाम जप करना, मंदिर आना, सत्संग में आना, प्रसाद खाना, ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी और वक्त है, टाइम है, हमको और सुधरने को टाइम चाहिए। टाइम क्यों चाहिए? सुधरने को तो 1 मिनट लगता है, क्योंकि मृत्यु भी 1 ही सेकंड में होती है। यमराज आएंगे, बोलेंगे नहीं थोड़ा टाइम दो, एक 5 मिनट दे, 5 मिनट के 1 मिनट भी यमराज नहीं देने वाला है। इट इज टू बी इंस्टेंटेनियस। ऑन दैट स्पॉट यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। When you will not get 1 minute there to surrender to God, why do you need so much of time? Why do you need so much of time to surrender to God when karna hi hai? It's like you know those who procrastinate their affection or their commitment towards God is like live-in relation. And what is the purpose of live-in relation? You can break the relation at any time. That's right. They don't want to take up a responsibility. The same institution, when you enter an institution of marriage, the same activity becomes a responsibility. You are making a commitment. Yes, I will take care of you. The wife takes the commitment of taking care of the husband. The husband takes the commitment of taking care of the wife. And there is some commitments. Whereas, same activities happen in live-in relation. And finally, one is murder. 90% of the cases you see, what you read in newspaper. When I read that session news, first I read, oh, they will live in reality. आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, because when you are indulging in wrong activities, the resultant activity is going to be bad. It cannot be good. When your input is, अगर मतलब आपने सड़े हुए सब्जी से आपने अगर मतलब वेजिटेबल्स यूज करके आपने अगर खाना बनाया, यू आर एक्सपेक्टिंग बाहर निकलेगा बहुत अच्छा, एकदम 56 भोग निकलेगा बाहर। इनपुट इज डर्टी, आउटपुट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डर्टी। इट्स योर चॉइस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, तमोगुण इज रिक्वायर्ड बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, एंड वन शुड नॉट फोकस more on Raju and Tamu, because if you take shelter by that, the activities by which you will do by taking shelter of Rajagun and Tamogun, you have to face the consequences. Lord has already given a warning, nadate kaschit papam na cha sukritim vibhum, मैं तुम्हारा पाप न लूंगा, पुण्य भी नहीं लूंगा। And you cannot say मेरी गलती नहीं है, ये मेरा गुण का है, क्योंकि गुण आपके अधीन हो सकते हैं। You have to become stronger than your gunas. The gunas should not be stronger. You have to take shelter of it. For example, आपको बारिश में जाना है, so you have 2 options: either you wear a raincoat or you put on a umbrella. But अगर रात को सोते हो तो आपको umbrella की जरूरत नहीं है। But if you are holding an umbrella, means what? You are a fool. So the gunas are there. You entered an institution of marriage. You want to produce nice devotee children? Take the shelter of Tamoguna, not a problem. But just because Tamoguna is there, I will take and I will use it. No. Don't use your senses or your desires by taking shelter of this. It is to be only used for a specific work. That is why intelligence has to take over your mind. जिस दिन आपका मन आपके बुद्धि पे भारी पड़ेगा, मतलब हावी हो गया ना, बहुत भारी पड़ेगा। जिस दिन आपका बुद्धि आपके मन पे भारी रहेगा, उस दिन यू आर सेफ एंड साउंड। टेक वन मोर वर्स। Okay, otherwise we'll stop here only because already 12:20. Take one more verse I was thinking. No, we can take this. One more verse we'll take. Yeah. 5 minutes. Read. Someone read. Next verse. However, one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. So, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान जो था वो आवृत हो जाता है अज्ञान की वजह से। इसके लिए लोग क्या होते हैं? मुह्यंती जनतवा, दे आर बिविल्डर्ड, दे आर कंफ्यूज्ड। यहाँ पे भगवान इसके लिए अगेन दिस वर्स इज कंटिन्यूएशन टू द अर्लियर वर्स, वेयर लॉर्ड इज सेइंग, when one is enlightened with knowledge by which nescience is destroyed.
जब उसको ज्ञान पूरी तरह से उससे ज्ञान से उसका बोलते हैं दिमाग का बत्ती जल जाता है, इज वेल, his ignorance gone. Then his knowledge reveals everything. Then his please check Padma is empty or not. Please check. Then he what is it? When one is enlightened with knowledge by which his nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything to him. अब everything में क्या है? What is that everything? Position, constitution. What is the soul's constitutional position and what is his purpose in this world? The problem is, I ask anyone, what is your goal of life? Nobody has an answer. Somebody may say, I want to become a teacher, I want to become a doctor, I want to become an engineer, fine. After you become a teacher, engineer, doctor, what is your goal? No, now I want to buy a house, get married, settle down. That's not a goal, that's a priority, which will change with time. Yeah, if I go and ask the child, what is your goal of life? If I get ice creams and chocolates, I'll be happy. But if same girl, if I ask about 5 minutes, if the same child I go and ask about after 10 years, that time, no, I'm not interested in lipsticks and cosmetics and all. Why? What's the change? The change is and knowledge. She has got knowledge. That's not the priority. Chocolate is not a priority of my life. I should look nice, beautiful, and useful. So similarly, once one gets this knowledge, everything is revealed to him that he is not the body, he is the soul. His job in this material world is to seek a way by which he can go back to the spiritual world from where he actually belongs. मैं बार बार यही कहता हूँ, we are all putting a permanent address in all the form, बैंक में permanent address. कितना दिन का permanent है? जैसे मरोगे वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑल और इनवैलिड. बट कभी सोचा एक्चुअली आवर परमानेंट एड्रेस इज, आवर एड्रेस इज नॉट दिस इज आवर टेम्पररी एड्रेस. एज लॉन्ग एज यू आर हाउस्ड इन दिस बॉडी, एक शरीर में आप हो तब तक ये आपका एड्रेस. ठीक है, उसके लिए यू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. आई एम नॉट सेइंग डोंट मेक योर लाइफ, नहीं अब क्या करना है, मुझे तो जाना है, शरीर है ना, वो नहीं कह रहा. You should make yourself comfortable, but you should not make yourself in so comfortable that you forget your main purpose of life. You need to be in this material world. You should have some comfort zone, but इतना comfort भी अच्छी बात नहीं है कि आप बाद में आपका जीवन का मकसद भूल जाए. So please, that's the most important thing that one should realize is constitutional position. And everything is revealed to him. ज्ञान आते ही सब कुछ आपके सामने, आप वही चीज को देख पाओगे. जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा वो चीज को आप देख नहीं पाओगे. आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बात कर, दिख तो रहा है, उसके पीछे का कारण नहीं दिखा, उसके पीछे का कारण दिखने लगेगा. एंड देन he says it is like the sun which lights up everything in daytime. दिन के समय में सूर्य जब उगता है तब रात को कुछ अंधेरा रहता, कुछ दिखता नहीं, पर जैसे सूर्य का उजाला हो जाता है एवरीथिंग स्टार्ट्स क्लियर. सिमिलरली दिस knowledge means what? There are various types of knowledge. Some people may say, sir, I am a doctor, I am an engineer, I am a scientist, I am this, I am that. Fine, great, but that is all material knowledge. Material knowledge which has got its own limitations. You know, Archimedes was so happy. What did Archimedes find out? That the weight of the body replaces equal amount of object. And what did Edison find out? I'm sorry, Newton find out? For that he ran naked. After finding out, he ran down naked. Who doesn't know Apple? It was the first Apple which fell down. Was it the first apple which fell down? Apple has been falling since time immemorial, even before all these scientists were born. Thing is,
we are just trying to find out the cause. The cause of all causes is God. That we are not able to see. We are able to see the cause, but we are not able to see the cause of all causes, which is God. And God is, that's why Brahma Samhita, what we say? Sarva Karana. He is सब कारणों का कारण वही. तो अगेन एक क्वेश्चन will arise. फिर अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूं, वो ही करा रहा है। तो वो क्या वो कर रहा है? तुम उनको पकड़ो, है ना? भाई तार्किक लोगों का काम कैसे? तर्क पे ही अपने आप को क्लीन बचाना. जैसे वो शराबी है ना, दो बड़ा मैंने पूजा पाठ कर लिया तो मैं पवित्र पापी बन गया. तो व्हाट इज दैट? व्हाट डू वी, हाउ डू वी आंसर दैट क्वेश्चन? अगर भगवान ही सब कुछ नियंत्रण है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, देन आई एम नॉट द कॉज ऑफ किलिंग यू, ही इज द कॉज, राइट? Before every activity, every action you do, there is something called consciousness which gives out a loud cry to you. It says, galat kar raha hai. Don't do it. But once this noise from inside is coming, that time what is it? Even a murderer, a rapist knows what he is doing is wrong. But then, when that consciousness, even his consciousness speaks. But उसको कैसे चुप करा देता है? I know what I'm doing is right, and right in that time he is under the shelter of some guna, either the rajo or the tamo. Always a nice story is there. Once one thief was there, big burglar, robber. चोरी पहले 8-10 हर चोरी के बाद सोचता था बस ये लास्ट चोरी, इसके बाद मैं चोरी नहीं करने वाला, I'm going to give up. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज थोड़ा खड़की होगी, थोड़ा एक चोरी कर, बस ऐसा करते करते पहले उसका सिल्वर जुबली हुआ. सिल्वर जुबली भाई इवन चोर लोग भी अपना जुबली मनाते होंगे. देन गोल्डन जुबली के एक शॉट बाकी था, 49 चोरी, 58 चोरी करना था. बोला दिस इज लास्ट, पक्का 58 चोरी, इसके बाद में मैं कोई चोरी करने वाला नहीं. तो 58 चोरी के लिए गया. बैड लक, उस चोरी में वो एंड जेल में बैठा था. भगवान इतने सा कठोर व्यक्ति मैंने देखा नहीं. इट्स लाइक गेटिंग आउट एट 99 ना. इट इज लाइक गेटिंग आउट एट 99. ये हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर रहा था, बस के बाद मैं छोड़ने वाला था. मैं बोला भी था, डिक्लेयर भी किया था, बट यू डिड नॉट सपोर्ट मी, यू डिड नॉट गिव हेल्प मी. दे गॉट हिम. आई टोल्ड हिम from the first chori itself, I was telling you, the first burglary what you did, that time I came and told you, don't do it, this is wrong. You heard me, but you behaved as if it was unheard. You did not act on it. I gave you n number of times. In fact, I gave you 49 chances. But even after 49 chances, when you did not change, I said it's time that you should be. तो अगर याद रखना, अगर 49 चोरी अगर आपने सक्सेसफुल किया तो इसमें भी भगवान की कृपा है, बट उसमें भी भगवान अंदर से आवाज दे रहे हैं मत, बिकॉज गॉड हैज गिवन ए फ्री विल टू यू. आपको इस धरती से बाहर निकलना है, इस मनुष्य इस जन्म 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है या यहीं अटके रहना है. ये चॉइस आपके हाथ में है. लॉर्ड इज नॉट टेकिंग दैट इन हिज कंट्रोल, ही इज कीपिंग इट विद यू. नहीं प्रभु जी, मुझे तो शाम को मस्ती करना है, इधर घूमना है, दारू पीना है, नॉनवेज करना है, प्लीज करो. लॉर्ड इज नॉट स्टॉपिंग. Whereas when you have a choice, Lord is giving. Second choice is, no, I would like to follow a very disciplined life and I want to get out of the cycle of birth and death. Then Lord says, fine, welcome. So God has given you a free will. He is not interfering with your free will. एक भक्त भी आज कल जाके शराब पी सकता है, व्यभिचार कर सकता है, जुआ खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट भगवान कभी भी उसे रोकते नहीं. बट नुकसान किसका है? So it is why it is very important for every one of us that we follow our four regulative principles strictly
and try to adhere to Satogun as much as possible. Let Satogun decide every activity which is to be done. Okay, with this I like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.